Okay, so the thing we are discussing now, till now we have seen that we have written some code and it is generating the exception. But here there is no problem in the code. There is no problem in the code. But as a user, we are explicitly throwing the exception. We are explicitly throwing the exception. That means we are explicitly mentioning that that code will generate exception. This is what, this is the that's time the throw keyword will used. Now the general structure, the general representation of the throw keyword is like that: throw new arithmetic exception, and as a parameter we will write any statement. This is the general format or the general structure. Now after throw statement, we are not allowed to run any statement. That is why, that is, if we write any statement after the throw, then we are not allowed to run that statement. That means if written, it will generate the compile time error. If we use any statement after that, then it will generate the error. We can use the throw keyword only for the throwable type. Otherwise, we will get compile time error saying incompatible types. Now through example, let's see through example, it will be clear to you that in this what we have done, this is the class we use, and in this class, what the thing we do in this class, we use a method, that is void valid, static void valid, and as a parameter we are passing integer I. Now inside it, what we have done inside it, we have used if I less than 18. That means the I value which will take if it is less than 18, then only the exceptions will be thrown. We are but it is, if you see, there is no error. If you only write if I less than 18, that means what? This is correct. It is possible that if any value that will be less than 18 normally, but we as a user creating this program like that, that if any value came and that is less than 18, then it will throw exception. We as a user generating the exception. हेलो This सर। is this हाँ बोलो। सर ये वाला एक बार फिर से एक बार बताइए ना अभी। अच्छा अच्छा ठीक है ठीक है। What is the throw keyword? till now till now we have seen that if there is an error, not error, there is a problem, invalid input we have given, then the exception is occurring, then the exception is occurred. This is for till now we have seen whatever the exceptions we have done, that if we use the divided by 0, then the arithmetic exception is generating like this. That means that we are putting some invalid data, putting some invalid input, and that's why the exception is throwing, because it is incompatible to our system. That's why that the exception is showing. But now throw keyword is what? This keyword will be used when we explicitly throw an exception. That means we as a user putting some code, that is what we are putting that code, or we are using the code such a way that that code will generate exception. We as a user mentioning that this code will generate exception. This is the thing, that we as a user explicitly mentioning that code that it will throw an exception. It is not like that invalid data we have given and that's why the exception is generating. It is as a user we are generating exception. We as a user wants to generate exception, then the throw keyword will be used. This is the format of the throw keyword, that is throw, we should write throw and then new arithmetic exception. This is the general structure: throw new arithmetic exception, and as a parameter we will write any statement. This is the general structure like this. Now some things we have to keep in mind, that after throw statements
we are not allowed to run any statement. That means if any statement written after this general throws format, then that statements will not execute. If we write, then it will generate the compile time error. So that means after throw statements, we will not write anything. We will not write anything, because if we write, then the exceptions will be generated. And we can use the throw keyword only for throwable type. That means if it is throwable, then only we will write there. Otherwise, sorry, we will get compile time error and it will say that it is incompatible. Now, to clear this thing, the clear of what I am saying, it will be clear if you see a program. That is, let's say this is the class we have taken and this class name is throw1. Now inside this class, you see we have used a method. This method is static void valid, and as a parameter it is taking the integer I value. Now inside this method, you see we have used if I less than 18. I less than 18. If I value this will be less than 18, then it will throw an exception. Now, if we compare to the other exceptions, which we have till seen now, that is, we are writing invalid code. That's why the exception is generating. But this is not the invalid code, because there is possible that any value should be less than 18. It is possible. So it is not like that this code will generate error. But we as a user wanting that this code will generate error. So not error, it will generate exceptions. We as a user wanting this. So then we will use the throw keyword in that case. So here we have written if I less than 18. That means if any value that is less than 18 we get, then the arithmetic exceptions, throw new arithmetic exceptions will be done. That is, throw new arithmetic exception, and we will use as a statement not valid. Or else, if the I value is greater than 18, then system.out.println, and it will print the welcome message. Then in the main, what we are doing in the main, we are using the try catch block. Now we explicitly mentioning the exception of this if block. If block will generate error if the I value is less than 18. Now we are passing here in the try block, you see we are passing valid. This is the method, and we are passing the I value is 16. So I value is 16 means what? It will generate error, it will generate exception, because if the I value is less than 18, then the exceptions will be thrown. That's why what we have used this valid method, and as a parameter we are passing 16. This is used inside the try block. But if we use 19, then there is no such thing we should have to done, because 19 means what? I value will be 19. Then that means what? 19 is greater than 18. So that means this if will not execute, this else will be executed in that time. So there is we do not have to mention that in the try block. But here we are giving the I value less than 18. We are passing that. So that's why we have to use it inside the try block. And after the catch block is used, it will catch the exceptions and it will print that whichever the exceptions will be shown. So that means when it will the execution, it will go to the try block and see valid method, and as a parameter 16. So that means the executions will be go here. So executions will go and I value is 16. So 16 less than 18. That means arithmetic exceptions will be thrown and it will print the not valid statement. So that's how, as a user, we are generating as an exception, explicitly generating an exception. When we have to explicitly generate exception, then only that this throw keyword should be used. Otherwise, we do not have to use the throw keyword. Okay. Clear?
So where we use this type of keyword, throw keyword? What ask me one thing one time. बोलो एक बार. So I said where we use throw keyword. When In which type? we have to, let's say if we have to doing a program that as a user we want to generate some exceptions and we are saying that it should generate some exceptions, and as a user we wanting this, in that cases this throw keyword should be used. This as a user we want some exception should occur. We as a user we are saying that some exception should occur from this program, then we use the throw keyword, then we use this throw. But maximum time, in maximum cases it is not like that, because why we as a user wants exception generating. So that's why it is used only in that cases when a user want that it should, this program should throw an exception, then as a explicitly user should do this. That's why the exceptions will be shown. Okay. So this is like we see one keyword, continue keyword. This is like that. और एक बार बोलो. सर हम लोग जो सी में यूज करते थे कंटिन्यू कीवर्ड, वही काम के लिए हम लोग थ्रो कीवर्ड यूज करेंगे. हाँ लाइक दैट. उसके Yes. हाँ ऐसे वो दोनों एक नहीं, मगर लाइक दैट बोल सकते हो तुम कि उसका क्या एग्जीक्यूशन को स्टॉप कर देना, तो उसके बाद से एग्जीक्यूशन स्टार्ट करो, ऐसे टाइप का. हाँ रानू तुम क्या बोल रहे थे? सर व्हाट इफ अगर कि मतलब वैलिड का वैल्यू अगर 18 से ज्यादा होगा तो वो डायरेक्ट वेलकम प्रिंट हो जाएगा. हाँ डायरेक्ट उसको तो तब क्या है, उसको तो तुमको ट्राई ब्लॉक में रखना ही नहीं है. उसको तो तुम जब अगर 18 से ज्यादा हुआ, मानो कि 19 है, वैलिड का जो वैल्यू है वो अगर 19 हुआ तो मेरा तो कोई यूज ही नहीं है, ट्राई ब्लॉक तो करना ही नहीं है. क्यों ट्राई ब्लॉक हम यूज करेंगे, वैल्यू तो आई से ग्रेटर देन है, तो मेरा तो वो एक्सेप्शन इफ कंडीशन में घुसेगा ही नहीं, वो तो एल्स कंडीशन में जाएगा और वेलकम प्रिंट कर देगा. तो उसको मेरा कोई जरूरत ही नहीं है ट्राई कैच ब्लॉक यूज करके कोड को हैंडल करने, मेरा क्या जरूरत है. तब हम तो ट्राई कैच ब्लॉक यूज ही नहीं करेंगे जब अगर आई से 18 का 18 वैल्यू 18 से ग्रेटर देन वैल्यू हुआ. मगर हाँ 18 से लेस देन वैल्यू हुआ तब मुझे क्या है उसको ट्राई ब्लॉक में रखना है, नहीं तो मेरा एक्सेप्शन जनरेट ऐसे शो नहीं कर पाएंगे. तो जब अगर वैल्यू मेरा लेस देन हुआ तभी उसको हम ट्राई कैच ब्लॉक में रखेंगे, मगर ज्यादा होगा तो मेरा कोई यूज ही नहीं है. ट्राई कैच ब्लॉक क्यों यूज करेंगे, एक्सेप्शंस का तो हैंडलिंग करना नहीं है उस टाइम मुझे. ठीक है. यस सर. Okay. So this is what the our throw keyword. Then next we have throws keyword. It is the another form. So we have seen the throw keyword. Next is the throws keyword. Now throws keyword is what it is used to declare the exception. It is used to declare the exception, or it is providing the information to the programmer that there may occur an exception. So during the call of that method, programmer must use the exception handling mechanism. And this throw keyword is also used to propagate the checked exception. Now, what is the meaning of this? Now, mainly in the real life environment, there will be the many programmers doing the program. They are doing the program, many programmers. Let's say we are using that from P1 to Pn. Let's say from P1 to Pn, this is what, this is the number of programmers they are doing. Now they are doing what, this number of programmers are working over a program.
So in that program there are many methods present. So let's say the P1 programmer writing the M1 method, the first method it is writing. Then the next programmer P2 is writing the M2 method. Then P3 programmer is writing the M3 method. P4 programmer is writing the M4 method, and PN programmer is writing the MN method. Means there is a large program in real life problem. There is always a large program there is, and some persons is doing or writing some method. Not one person is writing all the methods. Some person, there is only one person writing one method, like that. Now, suppose programmer P2 calls the M1 method. The programmer P2, whoever it is, he or she wants to call the M1 method through the M2. Similarly, say the P4 programmer calls the M2 method through M4. Now, P2 doesn't know what code is written inside the M1. That means what? If we say P1 is writing M1 method, P2 is writing M2 method, and P3 is writing the M3 method. Now let's say P1 writing the M1 method, P2 writes the M2 method, and P3 writes the M3 method. Now in such cases, in a condition it happens that P3 has to access P3, the P3 programmer has to access this M1 method through this M3 method. Now P3 is what? P3 has done the writing of this method, but P3 is not write this method M1. This method is write by whom? This method is write by P1. So P3 is what? P3 wants to call this M1 method through M3. Now P3 knows what is written inside M3, but P3 doesn't know what is written inside M1. So if let's say P3 writes M3 and calls M1 method, but in M1 method there is some code which is generating exception, but P3 doesn't know about that because P3 doesn't write the M1 na. So there will be some risky code which is present, and that's why okay. So that means what? Now P3 is written something M3, so P3 knows that. But whatever is written inside M1, P3 doesn't know. It directly calls. But in M1, such a code is written that is generating the exception. That is generating the exceptions. So P3 do what? P3 calls M1 method through M3 and abruptly do what? Abruptly the program get exception. So it will disturb. It will disturb when all of the like this the real world problem when we are writing such a big code. In that time this problem happens
then it will create confusion or it will create error. It will be disturbed. So remove this problem. Throws keyword is used. Throws keyword will do what? That means in this, what is the difference? Let's say P1 write the code M1. P1 write the code M1, and P1 as a programmer mention that this inside this M1, whatever the code is written, it will throw exception. It will throw the exception. Now, whenever P3, the programmer 3 will call the M1 method through M3, then it will see that in P1, it is P1 programmer already mentioned that this method can generate exception. So it is his or her responsibility to handling that exception. So like this, the programmer 3 will get the information. Yes, in this M1 method, the some code is written which will generate exception. That's why the whoever is writing that method mention that thing that it will generate the exception. Now it is my responsibility to handle that exception. But previously, if it is not mentioned, then what? Then the programmer 3 will call the M1 method through M3 and it will generate exception. The program will get stopped abruptly. So this is what, this is the way, this is the good programming technique. So that's why when P1 will write the M1, it will mention there that the exceptions will be generated, there. So it will be explicitly mentioning that. So that's why when P3 will call the M1 method through M3, then it will find that in M1 some code is written and that is generating the exception. So it is my responsibility to handle that exception. That's why in that time the throws keyword is used. Okay, so this is the basic difference. This is the way this throw keywords work. Sir, who use throw keywords? P1 or P3? P1 will be done by this P1. P1 will write this. Inside the M1 method, the throws keyword will be used. So that's why the P3 method will do, P3 programmer will use the M3 method to call the M1. So when it will call in M1, it will find the throws keyword. So that means it is exception is generated. So it will handle that exception there. Okay. So that's time the throws keyword is used. So This is P3 the programmer throws have to keyword. handle the exception. Yes. Now what is the P3 is calling that now. If it is called by, that means whoever the programmer call that method, whoever the programmer using the method calling that method, that is responsibility of this whoever is calling that programmer will have to handle that code. Whoever is calling, it is not that I am said that P3 is calling. It may happen P2 can call, it may happen PN can call. It any programmer can call that method with any other method. So whoever is calling, it is his or her responsibility to handle that code, because whoever is created that method directly mentioned that this method will generate exception. So now it is that his or her responsibility that whoever is calling will have to handle that. Okay. Clear? Yes, sir. Okay. So this is the example. Let's say this class is what this class, we have used class ex1. This is the name of the our normal class we have used, and it is extends exception class. So exceptions class, it is extending, and this is what, this is the our constructor. In this constructor as a parameter, it is using the string s. It is passing as a parameter the string value it is passing, and here we have used that
super.s, and there is another class which is main, and inside it what we have used, if I less than 18 and throw new x1, that means the throw will happen. Where this throw will happen? This throw will first go to here. This throw will go to the here exceptions class. There it is mentioning ex1. So that means this throws will go first where? This throws will goes to the constructor. This throws will go to the constructor because here it is mentioned throw new ex1 and as a parameter not valid. So that means what? Ex1 string s, this is like that. So that means it will go over to him. So from there it will call the parent class constructor and the statements will be printed. The statements you see, the statements will be printed. So that's how the throws keyword should be used. This is the throws keyword example. But this is the concept of this throws keyword. It is mainly sometimes it is given, but basically you have to in your exam mainly try catch block. Then what is the why you multiple catch blocks why use? This is the question sometimes given, this multiple catch block questions, and the final block throw keyword it will given to you. So this is all about, we can say this is all about our exceptions. This is all about our exceptions, the thing of exception. Now the thing in the previous class I have discussed that the some wrapper class concept which I have started. We already I have said that many wrapper classes are present in Java, but I said that I will discuss about it. Then because if we go over that, if we go to the next topic, then this concept is very much, this concept should have to be very much clear about the wrapper class, because in wrapper class concept we will see from the next onwards for this Java, we will see the wrapper class concept. So that's why I will explain the wrapper class concept with you in today, so that I will go over that next topic, which will be the our the based on this wrapper class concept. सर So थ्रो you कीवर्ड का already एग्जांपल से बता दीजिए ना. throws keyword का तो यस सर. अच्छा throws keyword का बताए थे हम, ठीक है बता दे रहे हैं. तो अब देखो इसमें क्या है कि हमको मेंशन कर देना है कि कौन सा कीवर्ड थ्रोस कर सकते हैं, मतलब जो मेथड मेरा थ्रो कर सकते हैं ये मुझे एक्सप्लिसिटली मेंशन कर देना है. तो हम लोग क्या है कि मेरा एक क्लास है, देखो क्लास ex1 जो हम लिए वो क्या है, मेरा ये एक्सेप्शन सुपर क्लास जो है, एक्सेप्शन सुपर क्लास जो है उसको एक्सटेंड कर रहा है, एक्सेप्शन सुपर क्लास को, ये मेरा सुपर क्लास है. तो ये एक्सेप्शन सुपर क्लास को क्या है, ex1 मेरा जो क्लास है वो एक्सटेंड कर रहा है. और उस क्लास के अंदर क्या है, हम एक कॉन्स्ट्रक्टर यूज किए, मतलब क्लास नेम और वो नेम सेम है, तो मतलब ये कॉन्स्ट्रक्टर हम यूज किए. और कॉन्स्ट्रक्टर में एज ए पैरामीटर क्या है, हम एक स्ट्रिंग वैल्यू पास कर रहा है, हमें स्ट्रिंग वैल्यू पास कर रहा है. और उसमें क्या है कि हम लोग उस कॉन्स्ट्रक्टर का काम है कि सुपर एस, मतलब उसको डायरेक्टली कॉल करना, जो सुपर कीवर्ड के थ्रू, मतलब पेरेंट क्लास का कॉन्स्ट्रक्टर जो है उसको कॉल करना, सुपर कीवर्ड यही यूज है सुपर कीवर्ड का, कि पेरेंट क्लास का जो कॉन्स्ट्रक्टर है उस पेरेंट क्लास का कॉन्स्ट्रक्टर को कॉल करने के लिए हम लोग सुपर कीवर्ड यूज करते हैं, अगर ये जो सुपर कॉन्स्ट्रक्टर के अंदर है तब. तो ये क्या है, ये मेरे कस्टमाइज एक्सेप्शन है. नेक्स्ट हम और एक क्लास लिए
जिसके अंदर क्या है, हम एक मेथड मेंशन किए, देखो स्टैटिक वॉइड वैलिड इंट आई, स्टैटिक वॉइड वैलिड and as a parameter int I throws ex1, throws ex1 मतलब यही है कि मतलब एक क्लास जो था ex1 और ये और एक क्लास है ex2, मतलब ये क्लास में क्या है हम मेंशन कर दे रहा है कि ये क्लास जो है, ये क्लास का जो ये मेथड है, ये मेथड थ्रो करेगा, किसके पास थ्रो करेगा, एक्सेप्शंस वन जो क्लास है उसके पास थ्रो करेगा। तो इसीलिए देखो मेंशन है थ्रोज ex1, यही थ्रोज कीवर्ड हम क्यों यूज करते हैं कि ये जो एक्सेप्शन, इसके अंदर जो एक्सेप्शंस है वो एक्सेप्शन जनरेट कर सकते हैं, मतलब क्लास ex2 जो है वो क्या है, प्रोग्रामर जो और एक प्रोग्रामर है वो लिखा, उसके अंदर लिख दिए कि हाँ ये जो है ये एक्सेप्शन थ्रो कर सकते हैं, और किसके पास थ्रो करेगा एक्सेप्शन, वो एक्सेप्शन वन क्लास के पास थ्रो करेगा। ये प्रोग्रामर टू, लेट से ये प्रोग्रामर वन किए, ये मेथड, ये जो क्लास है इसको वन लिखे, और ये जो क्लास है इसको प्रोग्रामर टू लिखे, ठीक है। तो प्रोग्रामर टू क्या किए, जब लिखना स्टार्ट किए तो लिखने के अंदर लिख दिया कि जो मेथड वो यूज किए स्टैटिक वॉइड वैलिड इंट आई, ये जो है वो थ्रो कर सकते हैं, मतलब ये जो है एक्सेप्शन जनरेट कर सकते हैं ये मेथड, और जो एक्सेप्शन जनरेट करेगा वो किसके पास थ्रो करेगा, ex1 के पास थ्रो करेगा, मतलब ex1 क्लास के पास ये थ्रो कर सकते हैं। और उसके अंदर देखो जैसे हम थ्रो कीवर्ड में देखे थे, एक मतलब एक्सप्लिसिट एक्सेप्शन हम लोग जनरेट किए, ऐसे करके एक्सप्लिसिट एक्सेप्शंस को हम जनरेट किए, जो क्या है, जिसको हम लोग क्या है उसमें मतलब आई से आई का वैल्यू अगर 18 से लेस रहा तो वो एक्सेप्शन थ्रो करेगा, ऐसे एक एक्सप्लिसिट एक्सेप्शन हम जनरेट किए। तो इसीलिए उसके अंदर देखो थ्रो कीवर्ड हम यूज करते हैं जब एक्सप्लिसिटली एक्सेप्शन मुझे जनरेट करना होता है, तब हम लोग थ्रो कीवर्ड यूज करते हैं। तो थ्रो न्यू ex1, ex1 क्यों, हम इसके पास थ्रो कर रहा है ex1 क्लास के पास, मतलब इसीलिए क्या है ex1 को हम यूज किए, और एज ए पैरामीटर हम नॉट वैलिड जो स्टेटमेंट है, नॉट वैलिड स्टेटमेंट को पास किए, और इसको हम प्रिंट करने चाहते हैं ऐसे। तो अब उसके पास क्या है देखो, हम लोग स्टैटिक वॉइड मेन, मतलब मेन क्लास जो है मेरा, मेन क्लास के अंदर हम वैलिड 12 कर दिए, वैलिड 12। अब 12 मतलब क्या है, आई का वैल्यू 18 से छोटा है, तो 18 से छोटा मतलब क्या है, एक्सेप्शंस मेरा जनरेट होगा, क्योंकि अगर 12 वैल्यू है मतलब आई का वैल्यू 18 से छोटा है, तो इसीलिए उसको क्या है हम ट्राई ब्लॉक के अंदर रखे, उसको हम लोग ट्राई ब्लॉक के अंदर रखे। और कैच ब्लॉक में क्या है, कैच ब्लॉक में जो एक्सेप्शंस जो है जो जनरेट कर सकते हैं उसको हम लोग कैच करेंगे, इसलिए ex1 रखे। अब इसमें क्या है, जब हम एग्जीक्यूट करेंगे तो आई का वैल्यू क्या होगा, 12 होगा, तो जब भी क्या है उसको आई का वैल्यू 12 मिला, जब भी आई का वैल्यू 12 मिला तो इसके पास से कहा एक्सेप्शन जाएगा, इधर आए, इधर आके क्या हुआ, आई का वैल्यू 12 मिला, क्योंकि उधर क्या मेंशन किया हम मेन के अंदर 12 वैलिड 12, मतलब आई का वैल्यू हम 12 पास कर रहा है, तो 12 लेस देन 18, यस 12 इज लेस देन 18। तो अगर 12 लेस देन 18 तो इफ के अंदर जाएगा, इफ के अंदर क्या मेंशन है, थ्रो न्यू ex1 नॉट वैलिड, ये मेंशन है, मतलब ex1 के पास मेरा क्या होगा, ex1 के पास मेरा थ्रो जाएगा, तो कहां से एग्जीक्यूशन, अब कहा इधर से एग्जीक्यूशन मेरा इधर जाएगा, क्योंकि इसके साथ मैच करके देखो ex1 एंड एज ए पैरामीटर स्ट्रिंग s मेंशन है, स्ट्रिंग x का सर मतलब क्या है, जब ex1 अपने मेथड के थ्रू जब ex2 को कॉल करेगा तब उसको मैसेज मतलब एक्सेप्शन जाएगा उसके पास। उसके पास भी एक्सेप्शंस का मैसेज जाएगा, उसके पास ये मैसेज को डिस्प्ले करने के लिए, मैसेज का डिस्प्ले करने के लिए उसके पास भी मैसेज जाएगा। तो ऐसे क्या है देखो, वो बोल दिया है कि हाँ एक्सेप्शंस जनरेट कर सकते हैं, एक्सेप्शंस का जो इंफॉर्मेशन है ऐसे इंफॉर्मेशन पास होता है। तो यही देखो इसीलिए क्या है, जब हुआ तो उसके अंदर गया, उसके अंदर क्या मिला उसको, सुपर डॉट एस, मतलब सुपर डॉट एस। अब इसका क्या है, इसका
सुपर क्लास कौन सा है, तो ये जो ex1 है इसका सुपर क्लास है, एक्सेप्शन सुपर क्लास है उसका। तो अब उसके बाद क्या होगा, तुम्हारा मैसेज जो है वो मैसेज डिस्प्ले होगा, मतलब ये नॉट वैलिड जो मैसेज है, ये नॉट वैलिड मैसेज डिस्प्ले होगा। ये क्या है कि देखो इन्फॉर्म कर रहा है कि मेरे पास एक्सेप्शंस है, हम एज ए जो क्लास है मेरे पास एक्सेप्शंस है, तो ये क्या है वो मेंशन कर रहा है कि ये जो है एक्सेप्शंस है। और सर अगर ex3 अगर कोई ये रहता तो मेथड रहता तो ex3 अगर ex मेथड नहीं, ex1 ex2 ये तो सब क्लास है। हाँ तुम बोलो कि क्लास का ये है कि हाँ तुम क्लास कर सकते हो, तब तुम उसको भी क्या है, उसको भी तुम दिखाने चाहते हो, मानो कि तुम उसको भी दिखाने चाहते हो, तो तब तुमको उसको भी क्या है, उसको भी ऐसे मैसेज पासिंग करके तुमको दिखाना है, उसको भी कोई थ्रो जो है उसका एक्सेप्शन जो होगा उसको थ्रो करके तुम उसके पास थ्रो करो कि मैसेज डिस्प्ले करने के लिए। तो सर सेम वाला स्टेटमेंट पूरा लिखना पड़ेगा कि सिर्फ लास्ट में थ्रोज ex3 लिख देंगे तो हो जाएगा? ना ना ना, तुमको तुमको स्टेटमेंट लिखना पड़ेगा, स्टेटमेंट लिख के उसको थ्रो करना है। मतलब स्टैटिक वॉइड वैलिड ऐसा पूरा लिखने लाइन लिखना हाँ, पड़ेगा सर? उस टाइम तो मेथड ओवरराइड कर दो, क्योंकि उसको एक्सटेंड करके तुम मेथड ओवरराइड कर दो, वो भी कर सकते हो। तब तुमको डायरेक्टली तुम थ्रो ऐसे नॉर्मल नहीं लिख सकते हो, थ्रो ऐसे करके वो नहीं लिख सकते हो, तुमको लिखना होगा, उसके बाद तुम उसको थ्रो कर। ठीक है, यस। ये थ्रो और थ्रोस कीवर्ड का थोड़ा इसमें रखना, क्योंकि ये थोड़ा मतलब कॉम्प्लेक्स कॉम्प्लेक्स नहीं, मतलब थोड़ा अंडरस्टैंडिंग की जगह। ठीक है, तो आज और नहीं स्टार्ट करेंगे, नेक्स्ट क्लास में ही तुम लोगों का वो रैपर क्लास का कॉन्सेप्ट स्टार्ट करेंगे, क्योंकि टाइम भी बहुत लेस हो गया। तो और बाकी किसी का कोई क्वेश्चंस, अजय, नीरज, रानू और जो बाकी लोग हैं, किसी का कोई क्वेश्चंस है? एनीवन हैज एनी क्वेश्चन? सर वो वाला भी एक बार दिखा दीजिए सर, ex3 अगर कोई क्लास रहेगा तो उसमें कैसे करेंगे, एक बार एग्जांपल दिखा दो। हम एक एग्जांपल दिखा देंगे, आज एकदम ये नहीं आपको अभी खत्म हो जाएगा, तो हम दिखा देंगे, तुम्हारा कोई ये नहीं है, हम उसका एग्जांपल दिखा देंगे तुमको। ठीक है सर। ठीक है, हम दिखा देंगे एग्जाम। Okay, so thank you everyone. I am ending the session.